Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I hope that you all are fine by the grace of Allah Almighty and taking care of yourself and your family. जी स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे और अपना काम, अपना होमवर्क प्रॉपरली और डेली कर रहे होंगे. Yes students, do you remember what we did in the last class? जी, what we did in the last class? We played a game. हमने एक गेम खेला था, याद है आपको? Yes, हमने मैजिक ई का गेम खेला था. एंड व्हेन वी एडेड ई, जब हमने ई को ऐड किया था तो क्या हुआ था? Yes, the vowel sound, the first sound of vowel changes into the second sound. मैजिक ई ने क्या किया था? It changed the first sound into the second sound. पहले फर्स्ट साउंड जो था वो सेकंड साउंड में चेंज हो गया था और उसके नेम में आ गया था जी, जो उसका ओरिजिनल साउंड होता है. याद है ना आप सबको? सो नाउ वी हैव लर्नड हाउ टू प्रोनाउंस द फर्स्ट साउंड ऑफ वाउल एंड सेकंड साउंड ऑफ वाउल. अब हम क्या करने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड्स हैविंग द थर्ड साउंड ऑफ वाउल. जिसमें थर्ड साउंड होती है वाउल की, उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इंशाल्लाह. सो स्टूडेंट्स, एज यू रिमेंबर दैट हाउ मेनी साउंड डज ए हैव? ए की कितनी साउंड्स होती हैं? डू यू रिमेंबर? यस, 3 साउंड्स. ए हैज़ 3 साउंड्स. व्हाट आर दे? ए अ. ए साउंड और ए साउंड की हमने प्रैक्टिस कर ली है. 2 साउंड्स की हम कर चुके हैं. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द थर्ड वाउल साउंड अ. ओके, लेट्स हैव प्रैक्टिस. यस स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक इकरा फोनिक रीडर 1, पेज नंबर 18. ओके, हैव यू ओपन्ड? सो नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस रीडिंग विद मी द थर्ड साउंड ऑफ वाउल ए. And what is the third sound of vowel A? As I have told you, A. What is the third sound? A. Let's start reading. Path, path, path. Path means way or rasta, as you can see in the picture. Next word is trom, trom. Next word is mask, mask, mask. You all are nowadays you all are using mask, okay, for your safety. सब यूज़ करते हैं ना. when you go outside, जब आप बाहर जाते हैं, then you use mask, okay. Next is class, class. Do you miss your class? Yes, we all miss you and your class. हम भी मिस कर रहे हैं and inshallah you will come soon in your classroom. So कौन सा साउंड यूज़ हो रहा है क्लास में? थर्ड साउंड. ओके, थर्ड साउंड ऑफ A is A, class. And the last word is east, Pakistan. In English we can say Pakistan, but we do normally say it Pakistan. Okay, Pakistan. As you can say that, you can see that the third vowel sound is used here. Third vowel sound use हो रहा है इन सब words में. आपने देखा कौन सा sound use हो रहा है? आ. और आ कौन सा sound है? ए का third sound. Very good. Let's read again the words with me. Path, trom, mask, class, Pakistan. Coming to the sentence, what is seen in the sentence? What you can see? Yes, here is a car, a green car. Let's start reading the sentence. My father drives a fast car. My father drives a fast car. But fast driving is very dangerous, okay? Now students, we are going to practice the third sound of vowel O. Why vowel O, not E and I?
बिकॉज ई हैज़ ओनली 2 साउंड्स एंड वी हैव प्रैक्टिस द साउंड्स. ई की 2 साउंड्स होती हैं और हमने उन दोनों साउंड्स की प्रैक्टिस कर ली है. एंड व्हाट आर द 2 साउंड्स ऑफ ई? कैन यू टेल मी? ए, ई. Very good. And what are the 2 sounds of I? E, I. Yes. So E and I have 2 sounds. That's why we have moved to the next vowel O. O has 3 sounds. Can you tell me what are they? कौन कौन सी होती हैं O की 3 sounds? O, O की हमने प्रैक्टिस कर ली है. O की भी हमने प्रैक्टिस कर ली है. नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड साउंड ऊ. और आज हम किसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं? थर्ड साउंड ऑफ वाउल ओ, ऊ की. ठीक है. मूविंग टू द पेज. ऑन पेज नंबर 18, sorry, on page number 19 we have the third sound of vowel O, oo. Coming to the first word, first picture, can you see what is this? This is wolf. Wolf. Next word is t, oo, toot, oo, toot. It shows the direction. और wolf किसको कहते हैं? भेड़िए को. It's an animal. Okay, moving to the next picture. ये को मज़ार लग रहा है हमको. And how can we pronounce it? T, u, b, tomb. How can we pronounce it? Tomb. Next, here is, what is this? W, u, woman. Next, hairdo. Now, how many words we have read? We have read 5 words, and what are they? Having the third sound of vowel o. और थर्ड साउंड क्या होता है? ऊ. अब आपको यही साउंड को सारे वर्ड्स में यूज़ करना है. वुल्फ, स्टार्ट रीडिंग विद मी. वुल्फ, टू, tomb, woman, hairdo. Very good. Coming to the sentence. In the picture we can see that 2 animals. और वो कौन से animals हैं? We are going to read, जो कि मूव कर रहे हैं किसी मज़ार की तरफ. तो how can we read it in English? 2 wolves move to tomb. आपने इस बात को नोटिस किया कि जितनी दफ़ा भी हमने ओ साउंड को रीड किया है तो हमने उसका थर्ड साउंड ही रीड किया है. ठीक है. 2 wolves move to tomb. यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है वो जो मैं एनिमल्स की बात कर रही थी, दे आर wolves. 2 wolves हैं जो कि tomb की तरफ मूव कर रहे हैं. Yes, they are moving to tomb. Okay, alhamdulillah, we have completed reading the second vowel O. हमने दूसरे वाउल का भी थर्ड साउंड को रीड कर लिया है. Yes students, moving to the next vowel sound, we have the last vowel U, and we are going to learn the third sound of vowel U. Do you remember what were the sounds? Yes, first sound of U is A, next is U, and the third one is U. Okay students, so coming to page number 20, here we have been given some words. यहाँ पर हमको कुछ words दिए गए हैं. Start reading with me. आपको मेरे साथ रीड कर. Students, what is the first word? Bull. And you know well, bull is an animal. What is the word? Bull. Without undoing भी पढ़ के आपको प्रैक्टिस करनी है. अब आप माशाल्लाह आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि आप विदाउट अनडूइंग भी पढ़ सकते हैं. थोड़ा सा इमेजिन करें अपने माइंड में साउंड्स को ला के. ठीक है. बुल. नेक्स्ट वर्ड इज बुश. बुश मीन्स झाड़ियाँ. अब बुश, अब आप इसको विदाउट अनडूइंग पढ़ के देखें. अब आप कोशिश किया करें कि तमाम वर्ड्स को बग़ैर अनडू किए अपने माइंड में उसकी साउंड्स को ला के और फिर प्रोनाउंस करने की कोशिश करें तो द वर्ड बिकम्स बुश. ओके. कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, लेट्स प्रैक्टिस विदाउट अनडूइंग. इसको बग़ैर अनडू किए पढ़ने की कोशिश करते हैं. जी. बुचर.
वेरी गुड, आपने भी यही रीड किया था ना, बुचर, गुड। नेक्स्ट वर्ड इज फुल, तो बहुत इजी वर्ड है, आप इसको इजीली प्रोनाउंस कर सकते हैं, फुल। एंड द ग्लास इज फुल एज यू कैन सी इन द पिक्चर। नेक्स्ट वर्ड इज, यस, खुद ही इमेजिन कीजिए, साउंड्स आपको पता हैं, पुश। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, मैन इज पुशिंग द कार, पुश। Okay students, coming to the sentence, first we have to see the picture. Yes, what you can see in the picture, क्या नज़र आ रहा है? Yes, butchers pull the bull from the bush. Butchers pull the bull from the bush. As you can see that some butchers are pulling the bull from the bush. Okay students, we have completed the third and last sound of the vowel U. Now you have to do some copy work. You have to note down these words in your notebook. Reading practice भी करते जाइए, and you have to write the sentence also at the end. I am going to show you the work. Here you can see that the heading has been mentioned. सबसे पहले heading है with a blue color pencil, and then I have highlighted the A sound with the blue color pencil like this. You all have to copy down like this. Then third sound of vowel O, and then third sound of vowel U. Okay students, you have to do like this, but first complete the work of magic key. सबसे पहले मैजिक की का काम कंप्लीट कीजिएगा। नो नीड टू बी इन हरी, कोई जल्दी की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इन पेजेस को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यू हैव टाइम, आप इसके लिए टाइम ले सकते हैं ऑफ 1 वीक, और आराम से इन पेजेस को कंप्लीट कीजिएगा विद द रीडिंग प्रैक्टिस, क्योंकि इसका मेन पर्पज़ ही रीडिंग प्रैक्टिस है। ओके, रीड करते करते साथ साथ साउंड को रीड कीजिएगा और राइट भी कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, note down the homework in your homework diary. You have to write words from pages 18, 19 and 20 of IPR1 in your notebook as you have done before. This is all for today students. See you in the next class. Till then, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.